So, hello, welcome to the linear integrated circuit series. And today we will discuss about closed loop configuration of an operational amplifier. In previous lecture, we have discussed about open loop configuration of amplifier in which there is no connection between input terminals and output. Here in closed loop configuration, we can see here that output is connected with the input. Output is connected with input. That means there is a feedback means some part of output is given to the some part of output is given to the input. Okay, so this is the closed loop configuration. So first we will discuss why this closed loop configuration is needed. इसको पढ़ने की नीड क्या है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की नीड क्यों पड़ी, दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड विद द कॉन्फ़िगरेशन. तो हमने देखो लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये ओपन लूप ओप एम्प है, सपोज ओपन लूप ओप एम्प है एंड दिस इज द आइडियल ट्रांसफर कर्व means this is VID and this is the output. So what we have seen in open loop the output is A times VID. This is the open loop gain. What is this? This is open loop gain. This is open loop gain. So what will happen as we increase this VID, the output will become saturated. For a small change in VID, the output will become saturated. So this was the positive V saturation that we have already discussed in previous lectures. So now we are just recapping it. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. ये दिस इज माइनस ऑफ वी सेट. सो व्हाट इज हैपनिंग, इस वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, अगर वीआईडी को थोड़ा सा भी हम बढ़ाएंगे तो गेन ऑलरेडी ज़्यादा है, ओपन लूप गेन है एंड इट्स वैल्यू इज वेरी हाई. गेन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा होते ही आउटपुट क्या हो जाएगा, सेचुरेशन में चला जाएगा. इट विल बी अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू. आउटपुट पर हमें ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट पर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलने लग जाएगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट open loop cannot open loop op amp cannot be used for linear application. Cannot be used for linear applications. This is very important term, that open loop cannot be used for linear applications, because in linear application if we are changing the input, the proportional change will happen to the आउटपुट. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर इनपुट में हम चेंज करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, सैचुरेशन में चला जाएगा. तो हमें क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बनाने की नीड पड़ी, क्योंकि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को हम लीनियर एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम इसमें व्हेनेवर वी अप्लाई अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, द आउटपुट लेवल will become saturated. For a small level slightly greater than zero, the voltage level slightly greater than zero, the output is driven to saturation. We can write here small change in VID will make V output saturated. So that's why we have to use closed loop configuration. Closed loop configuration means हम आउटपुट के वोल्टेज को इनपुट में
फीड करेंगे और इनपुट में फीड करने से क्या होगा, जो इनपुट का चेंज है, इनपुट का डिफरेंस है, वो हमेशा कम हो जाएगा और इनपुट का डिफरेंस अगर कम हो जाएगा तो आउटपुट कभी भी सैचुरेशन में नहीं पहुंचेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट वी नीड टू डिस्कस कि हम किस तरह से आउटपुट को फीडबैक देते हैं इनपुट में। सो हियर वी कैन सी इफ आउटपुट इज फीडबैक टू input, output is feedback to input. So we can write here, if the signal, if the signal is feedback, signal is feedback, if the signal is feedback by 180-degree phase with respect to input, then this feedback, is known as, let's say, negative feedback. Then this feedback is known as negative फीडबैक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम आउटपुट को इनपुट में आउट ऑफ फेज मोड में फीड करते हैं तो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इफ दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये हमारा आउटपुट हो गया, दिस इज द आउटपुट एंड वी हैव टू टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, सो दिस बिकम V1 and this become V2. So here the difference of these two voltages is V1 minus V2 और इस आउटपुट को अगर हम इनपुट में फीड करें, मीन्स यहाँ पर इनपुट में एक रेजिस्टेंस लगाते हुए इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, लेट्स से दिस इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। और ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ फेज विद इनपुट 180 डिग्री फेज पर, क्योंकि जब भी हम इन्वर्टिंग पर सप्लाई लगाते हैं तो आउटपुट क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो इफ एनी वोल्टेज इज फीडेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट मीन्स देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इस तरह का अगर हम फीडबैक करते हैं तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली if we can write here, if the signal feedback, if the signal feedback, if the signal is feedback is in phase, is in phase, in phase means there is a phase shift of 0 degree, in phase with the input, then this kind of feedback, is known as, let's say, known as positive feedback. This kind of feedback is known as positive feedback. What does it mean? Ki, suppose this is the operational amplifier, this is the symbol of op-amp, and we have output here, this is 6 number pin, inverting terminal, non-inverting terminal. Let's say this voltage is V1, this voltage is V2, and we have
VID as V1 minus V2. This is the difference that is going to be amplified. So if this output voltage is feedback, feedback means through a resistance, that is feedback resistance to the input, now this output is connected to the non-inverting terminal, so this will become in phase feedback, means there is a phase shift of 0 degree. So what will happen, this will be the positive feedback, but we will not utilize this feedback. We remember, we will not utilize this feedback, because if xi is the input, and let's say we have any kind of amplifier here, its gain is A, and we are getting some, let's say we are getting some output. तो अगर इसको हम फीडबैक करेंगे, दिस इज द फीडबैक एम्पलीफायर, लेट्स से दिस इज द फीडबैक, और ये इनपुट में जाकर अगर यहाँ प्लस होगा, इनपुट में ऐड होगा, लेट्स से दिस सिग्नल इज YI. सो अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो व्हाट विल हैपन, XI प्लस YI, दिस विल बिकम द इनपुट सिग्नल. तो फिर से हमारा इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और अगर इनपुट सिग्नल इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम था कि इनपुट में थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट सैचुरेशन में चला जाता है. तो फिर से यहाँ पर इनपुट में इंक्रीज होगा और एक सर्टेन टाइम के बाद आउटपुट सैचुरेशन में चला जाएगा. सो वी विल नॉट एबल टू यूज positive feedback closed loop configuration for linear applications. So what we need to do, we have to use negative feedback, क्योंकि उसमें क्या होगा, after every cycle, whenever we will get the output, जब भी हम आउटपुट लेंगे तो वो फीडबैक में इनपुट पे जाके इनपुट को माइनस करेगा, तो वो कभी भी आउटपुट को सिचुएशन में नहीं जाने देगा. सो सिंपली वी कैन राइट हियर एन ओपन लूप, we can write here an open loop, we can write here an closed loop op amp is the op amp which uses feedback, Okay, so this is the closed loop config. This is the introduction of closed loop configuration. So in next lecture, we will see that what are the types of closed loop configuration of operational amplifier. We will discuss all three kind of op amp. One is that we know, one is inverting closed loop configuration. Next is non-inverting closed loop configuration, and one will be the differential closed loop configuration. ये इस तरह के टाइप्स हमने ओपन लूप में भी पढ़े थे. द सिमिलर टाइप्स वी विल डिस्कस फॉर क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन. एक चीज़ और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, तो इस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में सिंस वी आर गेटिंग ओनली टू वैल्यूज, या तो पॉजिटिव वी सैचुरेशन मिल रहा है या फिर नेगेटिव वी सैचुरेशन मिल रहा है. दैट मीन्स कि इसको हम अगर यूज करना चाहें, सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ कंपैरेटर. दिस इज अ वेरी गुड कंपैरेटर. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कैन यूज्ड एज अ comparator. The application of open loop is comparator, but it cannot be used for linear application. For linear application we have to use closed loop configuration, और closed loop configuration में भी कौन सा, negative feedback. We will use negative feedback closed loop configuration. So thanks for watching this video. In next lecture we will see about types of closed loop configuration of op amp.